जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर मोहम्मद अली शाह और आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आई ट्रूली फील ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड टू हैव अ वेरी रेवर्ड पर्सनालिटी विद अस, जो किसी भी तारुफ से दूर दूर तक मोहताज नहीं है। आप सब उनको जानते हैं, हर कोई शख्स उनको जानता है और उनकी बहुत इज्जत भी करता है। और उनको अक्सर हम टीवी पैनल्स पे भी देखते हैं, बड़े बड़े चैनल्स पे देखते हैं, उनके हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं, उनकी किताबें भी पढ़ चुके हैं और सब जानते हैं। और उनकी जो इंसाइट्स होती हैं अक्सर सब उनसे इत्तेफाक रखते हैं। आज हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने अपनी पूरी सर्विस एक तरीके से काउंटर प्लीज इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म में निकाल दी है। ये जैक राइफल्स, जम्मू कश्मीर राइफल्स में कमीशन हुए थे, उन्होंने 6 जैक राइफल कमांड करी और वहीं पे ही जम्मू कश्मीर में ही ब्रिगेड डिवीजन, वहां पे इनका पूरा टेन्योर आप मान लीजिए। जम्मू कश्मीर के बारे में ये चप्पा चप्पा जानते हैं। शायद ही जम्मू कश्मीर में कोई ऐसी पगडंडी नहीं होगी जिसको जनरल जीडी बख्शी साहब जिनसे वाकिफ नहीं होंगे। मैंने जनरल जीडी बख्शी साहब को सुना रिपब्लिक चैनल पे, मेरे गौरव आर्या थे, अर्नब गोस्वामी थे, और वो कह रहे थे एक चीज मेरे को काफी मूव कर गई। उन्होंने कहा था एक एक सेंटेंस बोला था कि देखिए मेरे यार, को कैन यू सरकार से प्लीज ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, लेकिन we all owe our loyalty towards an organization which has looked after us, where we have bred, where we have grown up with. So I really oppose अग्निपथ on that. अच्छा, अब मैं सोचने लग गया भाई, क्योंकि मैं खुद एक शॉर्ट सर्विस ऑफिसर हूँ। मैं 5 साल के लिए आया था फौज में और मैं बहुत बड़ा एडवोकेटर हूँ शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए। बल्कि शॉर्ट सर्विस, मैं मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि अनुमान तौर पे शॉर्ट सर्विस इंसान को बहुत फायदा जाता है। लेकिन मेरे को ये समझना था जनरल साहब से कि सर आपके व्यू पॉइंट से, फिर मैं सर को फोन किया, सर ने मेरे को बहुत प्यार से तसल्ली से बहुत टाइम दिया और मेरे को समझाया बहुत सारी चीज बातें। मैं कहा सर इसी बात पे हम एक लाइव करते हैं यूट्यूब चैनल पे। सर हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि अग्निपथ, जिसके बारे में, जिससे काफी वेटरन्स इसके पक्ष में नहीं है, सर ऐसा क्या है सर? मतलब अगर आप मुझ जैसे जिनका तजुर्बा कम है, उम्र कम है, एक्सपीरियंस कम है, पूछेंगे तो हो सकता है कि मेरी लिमिटेड समझ हो, तो मैं सोचूंगा कि ये शायद अच्छी स्कीम है ये। तो हम आपसे समझना चाहेंगे सर, क्यों ये बहुत से वेटरन इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं सर? थैंक यू मोहम्मद अली शाह। बेटा, बात ऐसी है कि जैसे आपने प्रीफेस में बोला कि मैंने बहुत सारे और वेटरन्स ने अपनी पूरी जिंदगी इस फौज की खिदमत में, इस मुल्क की खिदमत में लगाई, ठीक है, और बहुत हमने सहा है। जैसे कि मैं 71 की लड़ाई में था, मैं पंजाब में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में था, मैं कारगिल में लड़ा हूँ, मैं किश्तवाड़ में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन किए हैं, रजौरी पुंछ में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन किए हैं। बहुत सारे साथी मेरे शहीद हुए, कई तो मेरी बाहों में उन्होंने दम तोड़ा है, आखिरी सांसें ली है, किसी की हथकड़ियां मैंने बाहर आती देखी है। बहुत कुछ नहीं इस लंबे अरसे, 37 साल एज एन ऑफिसर, और अगर आप एनडीए के 3 साल और आईएमए के 1 साल जोड़ लें तो कोई 41 ईयर्स इन बूट्स है। तो इसके लिए देखिए हमारे दिल में बहुत एक, अभी भी हालांकि फौज छोड़े 13 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन वहां से रिश्ता नाता टूट नहीं सकता। और अगर कुछ ऐसी कोई बात होती है जिससे हमें फिक्र पैदा हो जाए तो ये लाजमी है, ये स्वाभाविक है कि भाई आप उस पर अपनी जो चिंताएं हैं वो अर्ज करेंगे। मैं रक्षा मंत्री जी से मिला हूँ, मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ एनएसए साहब से मिलने का। मैंने उनको भी ये अपनी जो एप्रीहेंशंस थी ज्यादातर जो हमारे हमारे जो वेटरन्स की हैं, वो मैंने उनके पास जरूर रखी। देखिए, लेट मी स्टार्ट वेरी लॉजिकली। अमेरिकन कहते हैं इफ एन थिंग एंट ब्रोक डोंट फिक्स इट। यू अंडरस्टैंड? अगर कोई चीज टूटी नहीं है तो उसे जोड़ने की कोशिश मत करो। मेरा ख्याल हमारे आर्म्ड फोर्सेस आज के दिन मैं बड़ी सर्टेनिटी से कह सकता हूँ इस पूरे देश में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड institution, most highly respected institution is the armed forces. A career in the armed forces, a career of service, sacrifice, love for the country, patriotism,
I mean, it signifies the highest respect. हमारा कोई भी लड़का शहीद होता है तो अभी भी हमारा कोई भी लड़का शहीद होता है तो हजूम निकल आता है, सैलाब दुनिया का टूट पड़ता। सो मेरे को ये समझ नहीं आई कि हमने क्यों इस आर्म्ड फोर्सेस की इंस्टीट्यूशन पे इतना फोकस करके हम ऐसे फोकस कर रहे हैं जैसे कि ये 62 की लड़ाई हार के आई। ठीक है, सिवाय 62 की लड़ाई के इस फौज ने कोई लड़ाई नहीं हारी, जीत के दी है। वर्ल्ड वॉर 1 हो, वर्ल्ड वॉर 2 हो, एज अ इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री अगर आप बात करें, इंडिपेंडेंस के बाद 47 48 हो, 61 गोवा ऑपरेशन, 62 केवल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से हमको शिकस्त खानी पड़ी, नहीं तो उसके बाद 65 का युद्ध, 71 का युद्ध तो सबसे बड़ी शानदार जीत। मैंने अपनी सर्विस उस युद्ध में शुरू। ये अब हमको कहा जा रहा है कि साहब अक्रॉस द बोर्ड चेंज की जरूरत है, तो मेरा पहला सवाल है, हैज द आर्म्ड फोर्सेस फेल्ड यू दैट यू नीड सच ड्रास्टिक चेंज अक्रॉस द बोर्ड, स्वीपिंग चेंज? वो तब किया जाता है जब कहते हैं कि भाई दिस इंस्टीट्यूशन इज नॉट परफॉर्म्ड, ये लड़ाई में हार पिट के आई, इसको तो सिर से पैर तक बदली करना चाहिए। आई एम सॉरी, ये जीत के आई ये सारी जंगें। सो इफ इट एंड broken, don't fix it. That is number 1. Number 2, timing of fixing. ठीक है, टाइमिंग ऑफ fixing. अभी इसके आपके external threats are at the highest. If at this juncture you create a turmoil, a flux in the armed forces, a radical sea change, a paradigm shift, वो अगले 2-3-4 साल तो आपको टर्बुलेंस सहनी पड़ेगी। बाहरी देश इस टर्बुलेंस का फायदा उठा सकते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। एंड टू गिव यू, आई एम अ मिलिट्री हिस्ट्री स्टूडेंट, पीएचडी मेरी उसमें है, तो आईड लाइक टू टेल यू दैट 62 के बाद हमने अपनी आर्मी को एक्सपेंड करना शुरू किया, जो हमको बहुत पहले करना चाहिए। ठीक है, तो जब हम आर्मी एक्सपेंड कर रहे थे, हाउ डू यू एक्सपेंड एन आर्मी? बाय 10 डिविजन, यू नो, you take a corps, you raise new battalions. To raise a new battalion, what do you have to do? You have to take a experienced corps from an old unit. यानी old NCOs, JCOs, old jawans, some experienced officers लाके नई यूनिट में डाले जाते हैं। ठीक है, और एक नए कर्नल से एक नए यूनिट की रेजिंग होती है। दोनों यूनिट्स डिस्टेबलाइज्ड हैं, जिसने कंट्रीब्यूट किया है, जिसने रिसीव किया है। 2-3 साल उनको लगते हैं बाय द टाइम दे स्टेबलाइज। ठीक है, ये जब हम 62 में हमने शुरू किया, 65 तक पाकिस्तान रियलाइज कि अब ये डिस्टेबलाइज फेज जो है इनका खत्म होने वाला है, ये पूरे अब ये संभल जाएंगे। सो अटैक बिफोर दिस कंट्री रिकवर्स फ्रॉम दैट डिस्टेबलाइजेशन, फ्रॉम दैट चर्न, इसको बोलते हैं ना, चर्न हो गया, हिला के रख दिया, झिझोड़ के रख दिए, सारे यूनिट सारे रेजिमेंट्स करने पड़े, जरूरी था, हमने किया। और पाकिस्तान ने वो समय चूज किया अटैक का। 65 was Pakistan's last chance. It was a cold-blooded calculation कि hit them when they are destabilized. So why are we destabilizing ourselves with not one change, but a number of changes put together, and there are more coming. So you, by all means, change is good, but armed forces are very traditional organizations. By their innate nature, they do not like to create turbulence and chaos and change, especially before battle. 62 की लड़ाई में भी कौल साहब ने बोला, उमराव सिंह साहब जो है 33 कोर जीओसी, ही डजंट, वो बड़ा अपोज कर रहा है फॉरवर्ड पॉलिसी को, तो नया कोर खड़ा कर। Do you know 4 कोर was raised even as the war was on? और 4 कोर लड़ रहा था कि टाइपराइटर नहीं है, हमको टाइपराइटर दो, टेबल दो, ये बिल्डिंग असम राइफल से खाली कराओ। वो क्या लड़ेगा? You know what happened? Jesus, So there is a certain amount of price you pay for generating organizational turbulence, and especially with an across the board change. You very rightly said that you are from short service, and to that extent, you don't see why there should not be a short service cadre, right? Short service officers have done very well. I think they've held their end of the gun. They've served the nation well in war and peace both.
And in CICT operations, I have had so many short service officers under me. They did a damn fine job. But they were serving for 5 years minimum. Then they served for 10. They had a viable tenure in which to Jesus. pick up their job, learn their job, and then pay back. You know, there is a time that you are learning, then you stabilize, then you pay back to the organization which recruited you. Now, short service was supposed to be a support card. It was not the main card. It was कि भाई वो aspiration level बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. Everybody wants to be the chief. So let's have a cadre which is very clear कि साहब we are here for a short term. So he's not adding to the problems of career management. You know? So it was a support card. Now you have made the whole army, the whole armed forces are a support card. Have you understood? Right? पहले तो a portion was short service, the rest was permanent. Now the whole army is short service as per the new scheme. So it has its consequences. By tradition, by historical experience, the Indian Army has always been an all-volunteer, full-color service army that it was in World War I, World War II, and then in all the post-independence conflicts. It will be a culture shock to go to a short service model for the whole army. Support cadre, yes, but the whole army, I'm sorry, that is a very, very major thing, and you should think it through. You will have to think it through. You can't do it in a tearing hurry ki, I've changed the army. It's not change for the sake of change. Now, what is the reason for this change? I mean, I have interacted with the authors who have worked on this plan, and they are very well-meaning people. But, sometimes the way to hell is paved with good intention. Note of caution. So what I'm trying to say is, they said, sir, the army is getting old. I agree. If you have to fight in Ladakh, if you have to fight in Arunachal at the heights, you need a very young and a very fit army. Right? So it's right that you should try and reduce the average age of the army as they're planning to do, because as welfare measures, when I joined the army and I fought the 71 war, we had a color service of 7 years for our jawan. 7 साल की कलर सर्विस, ठीक है सर. और वो जो कलर सर्विस थी उसमें हमारा जवान आता था, सीखता था, and he contributed very well. We broke Pakistan in 2. You haven't in 13 days. इससे बड़ी मिलिट्री विक्ट्री आपकी साहब पिछले 2000 साल में नहीं हुई. So if you want to go back to creating, at that time we had a very young army. I was 19, 20, 21, we were commissioned officer. My CO was 32 years of age. वो बीपीटी बाकियों से अच्छी करता था. वो डेमो देता था मंकी रोग. Such a young CO we had. And with those young COs, we did wonders. With young officers, young blood, young jawan, young CO. That time we were having an army of 7 years service. So you want to get a younger profile, you want to reduce the age profile, then go in for the tried and tested 7 years model. The veterans की जो objection है right now, and we are giving constructive suggestion. We are not just doing destructive criticism or criticizing for the heck of criticizing. We are saying, okay, you worked out a scheme, you've put a lot of effort, take some suggestions, improve the scheme. Why 4 years? Why 4 years? 4 years में 6 महीने ट्रेनिंग, पहले 2-2 साल की एनुअल लीव होती, ठीक है. तो अगर 2-2 महीने की एनुअल लीव होती थी, हर साल 2-2 महीने अगर आप करें तो 6 महीने तो ये गए. राइट सर. तो उसका जवाब उन्होंने दिया, साहब हमने तो छुट्टी कम करके 1 महीना कर दिया. अग्निवीरों के लिए छुट्टी 1 महीना हो, ठीक है साहब. अब Mohammed, you've also served in the areas like Siachen, areas like Kargil. I think you need that damn 2 months of leave. Please, it's been worked out over a long period of time. I have been in one combat area after another. I knew the kind of suicides that were taking place, fragging incidents that were taking place, Jawan going berserk. The study psychological directorate key was that every 90 days,
the combat stress levels start rising, send that boy on leave. Give him a break, either casual leave or annual. Now you suddenly decide, now 4 साल is sacrosanct, and क्योंकि 4 साल में he's not able to give enough, so we will cut out annual leave by 1. I mean, for God's sake, that annual leave for 2 months was thought out here. That boy has to go look after his mom, dad, put them in a hospital, take them here, there. वो कब करेगा? Is Agniveer, you're not trying to punish the guy, na? You volunteered for the army, we'll show you. We'll show you life. ऐसा थोड़ी ना है. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मेरा कहना ये है कि the army उसका second career बड़ा अच्छा कर देंगे. What about the first career? What does the army get for the investment it makes in the Agniveer? Now, even for the infantry, when you are an individual, you still have to gel with the platoon and the company as a combat team. What about armored corps? Tank crew of 3 or 4, gun crew of 6. Crew served weapons. You just can't have a guy coming in, going out every 2 years. How does that crew gel? And the weakest link, if the loader is poor, what can the gunner do? What can the tank commander do? That's the point. See, please understand what I'm trying to say. मैं कह रहा हूँ साहब कि इसमें प्रॉब्लम होगी आपको 4 महीने में. हमने धूप में बाल सफेद नहीं किए. ठीक है, आपको प्रॉब्लम होगी. जो सर्विस है जिसने की हुई है और कॉम्बैट सर्विस की हुई है, वो आपको बताएगा कि आपको प्रॉब्लम होगी 4 साल. तो व्हाट इज सो सैक्रोसैंक्ट अबाउट 4 years? Please increase it to 7. That is optimal. Tried and tested model of the 71 war. Victory. जीत. सर अगर 7 साल बढ़ाएंगे तो बोलेंगे 7 साल क्यों, 10 साल क्यों? Sorry, I can't hear you. सर अगर 7 साल बढ़ाएंगे, I can't hear you. Oh God. Can you hear me now, sir? Sir. No worries, sir. Hello. You can't hear me. Sir, can you hear me, sir? Hello. Yes, sir. Can you hear me, sir? Hello. Sir, can you hear me, sir? नहीं. Sorry. कोई बात नहीं, sir. Sir, कोई बात नहीं. आप बोलिए, sir. I will listen. I will listen. You please speak, sir. Yes, sir. Now I can you, now. Okay, you can hear, sir. So I'll just continue from where I left off. What I'm trying to say is 4 years is not adequate. So why 4 years? So I asked the boy, जैसे सर अगर 4 साल से ज्यादा सर्विस करें आपको ग्रेचुटी देनी पड़ेगी. यार, how much is the gratuity you and I get 1 month for every year of service? Is that a sum that will sink the economy of India? For God's sake, आप कह क्या रहे हैं? Are you punished? Is Agniveer, is it a crime to be an Agniveer? कि आपको पेंशन तो मिलेगी नहीं, आपको हम मेडिकल कवर नहीं देंगे, CST कैंटीन फैसिलिटी भी ले लेंगे. नहीं, आपको तुमको बाकियों को अगर 2 महीने छुट्टी मिलती है तो आपकी हम 1 महीने कर देंगे. He's not a clerk sitting in South Block, na, civilian clerk. He needs that leave. He has to look after mom, dad, mostly be a bachelor, old mom, dad. उसको करना है, घर की खेती बाड़ी आके कभी देखनी है, neighbors encroach कर रहे हैं. You know the problems that our boys face. So 4 years just not to give him gratuity. I am amazed. Make it viable. So my constructive suggestion, instead of just criticizing, let me offer constructive suggestion. 7 years is the best for him to integrate. It is tried, tested, proven in battle. Sir, ये चीज मैं भी कहता हूँ कि अगर 7 साल करेंगे तो बोलेंगे 7 साल क्यों, 10 साल क्यों नहीं. अब 10 साल करेंगे तो बोलेंगे 10 साल क्यों. नहीं, क्योंकि 7 साल पहले भी था ना. एक्सक्यूज मी, 7 साल पहले भी था. किसी ने ऑब्जेक्ट किया था? नहीं. ठीक है. उसके बाद आई टेल यू व्हाई इट हैपेंड. सुन लो, ताकि मेरे जैसे मैंने कहा बहुत तजुर्बा है. पंजाब में हम लड़े हैं. Who was in the Golden Temple leading the fight? You remember that name? General Brar, sir. No. That was from our side. From the opposite side, who was leading the fight of the
Major General Shabek Singh. Have you heard that sir, name? And you know sir, sir, that bulk of the guys there were ex-Fauji's. sir. Please understand, हम लोग ये पहले भुगते हुए हैं. At that time, the worry was keep a hold of your ex-servicemen. Don't let them be misguided. Don't let them be co-opted by the terrorists, Maoists. So they said increase color service. Do you know that? Increase color service. Increase the color service so that he doesn't get strayed. So it's all very well to say, अरे इतना डिसिप्लिन लड़का हमारा कैसे मिसलीड हो सकता है, कैसे मिसगाइड हो सकता है. मेरा सीधा और मिलिट्री हिस्ट्री सवाल है, मेजर जनरल शाबेग सिंह कौन था? जो सारे लोग जो आधे से ज्यादा जो लड़ रहे थे वहां गोल्डन टेम्पल में, वो कौन थे? फौजी. And you know there are reports of these boys joining the Maoist ranks. They are exploited. You see, अब now we are trying to give them ensure second career progression. आप मुझे बताइए, आप अभी तक जो हमारा second career progression, very natural flow, that you come to the armed forces, serve young, go into CRPF, go into BSF, go into ITBP, etc., where your tactical skills will be of use to that organization. But for turf warfare reasons, they said, nahi sahab, we want young people. ये तो बुड्ढे होके आए हैं. What is the retiring age in CRPF? 58. I hope you know that. He's very Yes, young. yes, sir. Huh? BSF 58 for the Jawan. Now tell me, मोहम्मद बेटा, that अगर आप अभी एक young man है गांव में, आपके पास career choices हैं, would you like to go to the CRPF where once I get in, I'm permanent and I will come out at 58 years of age, right? 58 years of age में मैं बाहर. BSF same thing, CISF same thing, police same thing. You know the most preferred career now is the police. So you will get aspirants. 2 साल तो साहब आपने सब रिक्रूटमेंट बंद कर दी थी. You are aware? जी पिछले जी 2 सर, साल कोविड की वजह से. आपने कोई जी सर. रिक्रूटमेंट नहीं. बेटा हर साल हमारे 60,000 लड़के रिटायर होते. 60,000, 60,000, 1,20,000. ये साल आधे से ज्यादा गुजर गया. 30,000, 1.5 लाख के एक सिंपल बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन पे यू आर शॉर्ट इन द आर्मी by 1,50,000. For God's sake, you as a soldier understand the implication. Where is one corps? Tell me, where is one corps? Taken Matra, out sir. from the plane and sent up to the mountains. Pakistan has 4 strike corps to your 3. One corps you have to put against the Chinese. By my reckoning, you need to raise another corps. You cut the army by 1,50,000 for what? I mean, what are we trying to achieve? The theory is, I'll tell you the theory. The theory is that साहब हम इससे जो रेवेन्यू बजट घटा के कैपिटल बजट बढ़ाएंगे और हथियार ज्यादा खरीदेंगे. आज कह रही इकोनॉमिस्ट ही टेल यू कि ये जो पैसा है जो आप पेंशन ना दे के बचाएंगे, ये 15 साल के बाद रियलाइज, जबकि वो जवान रिटायर हो गए. अभी यू विल स्टिल हैव टू फाइंड मनी टू बाय वेपन्स. You are doing the whole thing as a cost-cutting exercise. Excellent. The economists are in charge of the armed forces now. The accountants are in charge. What about the generals? Somebody has to make that army fight tomorrow. What about the operational effectiveness? At 4 years, my sincere advice as an old timer who has seen lot of that. लड़ाइयों की कमी नहीं है साहब, बहुत देखा, बहुत भुगता. 4 साल में आपका काम नहीं बनेगा. 7 years would be the best. अगर आपको पैसे की इतनी आज किल्लत हो गई है तो आप 5 या 6 साल आपको करना होगा. ठीक है. Even the short service commission, when you joined, before you joined it was 5, then it was making 10 years, because you need to, भाई मैंने इन्वेस्ट किया है आप में, I need you to pay back to the unit. आप समझ रहे हैं? You know the unit also has to exploit. Now एक सीओ कारगिल में डिप्लॉयड है, लाइन ऑफ कंट्रोल में डिप्लॉयड है, हर रात उसको 100-150 एम्बुशेस भेजने पड़ते हैं.
वो अपना ऑपरेशनल टास्क करेगा या लड़के को सिखाए? पहले 11 महीने की इन्फेंट्री के ऑफिसर के जवान की ट्रेनिंग होती थी, 11 महीने, अब आपने काट के 6 महीना कर दिया है। somebody somewhere will have to do the balance of the training, ठीक है ना? वो जो रेजिमेंटल सेंटर है वो क्या करे, बोल साहब बीपीटी पास करा देंगे, फायरिंग पास करा देंगे, मंकी रोप 9 फीट पिच पास करा के ड्रिल सिखा के भेज देंगे, बाकी पलटन सिखाए। अब वो पलटन का सीओ अपना जॉब करेगा या वो लड़ाएगा या वो ट्रेन करेगा? It will be at some cost to him. Then you are saying out of the 43,000 Agniveer, 46,000 that you will take the first course. Firstly, 46,000 की figure में I'm slightly now got some question marks. 60,000 retire every year. 2 साल के gap के बाद आप ले रहे हैं. You have to fill up the old gaps. जी. Hopefully. Then you have to get new people. You know, so you would have to recruit a lot more than 46,000. Maybe the rationale is कि ये pilot की scheme जैसे हम try करते हैं. Okay, fine, I understand. But the retention level cannot just be 1 second. Sorry, No. The retention level cannot be 25%. Should not be 25%. So my 2 concrete suggestions to improve this scheme. Go ahead with the scheme. The government has announced it. There is certain prestige that the government has. I wouldn't like that prestige to come down. But far greater is our country. We cannot afford to lose the next war. We cannot afford to do badly in the next war. सर आपने बोला far greater is our country, बहुत दुरुस्त फरमाया आपने. अब I want to ask you one thing sir. एक बात आप भी मानेंगे इस बात से कि हमारे देश में कमी कहाँ पर है? हमारे देश में कमी है अनुशासन की. As Indians, let's accept the reality. कई लोगों को उनको बात कड़वी लगेगी, मगर हकीकत की बात है कि हमारे देश में अनुशासन नहीं है. We as Indians are not very disciplined, sir. तो क्या आपको लगता नहीं? जी सर. I understand that we are now trying to make the army an institute to teach discipline to the rest of the country. Fine, we'll do it. But we have a primary job of defending the country. Can it be at the cost of this कि मैं पूरे देश का discipline ठीक कर दूंगा, मैं वो लड़ाई बाद में देखी जाएगी, somebody else will do it. Okay. Is that logical? मैं ये बात आपसे समझना चाहता हूँ जो आपने बोला, it is at the cost of defending a country. If you ask a youngster like me, sir, अब मैं इसीलिए आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि how is it at the cost of defending a country? I think इससे तो हमारी देश की फौज में यंग ब्लड आएगा तो हम तो और मजबूत होंगे ना सर. नहीं, of course young blood आएगा. पहले भी young blood था 71 के टाइम. I told you हमारी जवान की कलर सर्विस केवल 7 साल थी, आज 19 साल. You understand? We had young blood. कोई नई चीज नहीं है कि एकदम से किसी को ब्रेन वेव आई है कि बड़ी बुढ़ी फौज हो गई है, अब हमको इसको यंग करना है. पहले भी यंग थी. उसको इसलिए बढ़ाया गया था कि वो जो है उनको रीसेटलमेंट में प्रॉब्लम हो रही थी. कोई पैरामिलिट्री फोर्स उनको लेने को तैयार नहीं. वो केवल बेचारे वॉचमैन बनते थे या ये बनते थे. इसलिए जब पंजाब में प्रॉब्लम हुई तो ये खतरा लोगों को लगा कि साहब मुझे मालूम है, आई वाज सर्विंग. जब हम एक सर्विसमैन रैलीज कर रहे थे कि प्लीज मत मिसलीड होइए, डोंट गेट मिसगाइडेड. हैव यू अंडरस्टूड? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इसलिए आपने सर्विस अवधि बढ़ाई या डोंट रिलीज ट्रेन्ड मैन इनटू द सिविल स्ट्रीम, क्योंकि वहां से वो लोग शायद इनको मिसयूज करें. यू नो दैट. हम इतिहास नहीं पढ़ते ना. Those who don't learn from history are condemned to repeat it. अब आप भूल गए, अब आप कर साहब वो तो बिल्कुल मिसगाइड नहीं होगा. तो भाई वो शाबेग सिंह कौन था? Who was मेजर जनरल शाबेग? वो तो मेजर जनरल मिसगाइड हो गया. तो यार बेचारा जवान को करन लॉरेंस बिश्नोई का गैंग ले जाए तो you see, you will have to ensure he has a second career. कोशिश कर रही है, बहुत सरकार ने काम किया. I am deeply impressed कि बड़ा सीरियस काम हुआ है. हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि साहब अभी ये पार्लियामेंट ने इसको एनैक्ट नहीं किया, कल लोग बदली हो जाएं, खुदा ना खास्ता कोई दूसरी सरकार आ जाए, क्या वो मानेगी ये वाले एश्योरेंसेस? ठीक है. सो यू हैव टू सॉलिडिफाई देम बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट.
You may have to amend your Army Act because Agniveer is not an entity in the Army. But I'm sure that will be done. Though that is small problem. My two major suggestions are increase age to 7 years service, okay? And if you really want to get it down, 5 to 6, so that there is some time to train that boy and then make use of it. Some time to integrate him into the naam, namak, nishan ethos that you and I were brought up. पलटन का नाम, पलटन की इज्जत, पलटन का निशान. अब आप ये भी कर रहे हैं कि you are mixing up the units. Regiments are going to get diluted over a period of time. जो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही. Okay, fine. All India, all class. Netaji also had in the Azad was all India, all class. We can live with that. But you also cut the army by 1.5 lakhs. Then, from the recruitment pattern that we see, you will take years to make up that gap. Are these the most peaceful years of the Indian Republic that we can afford? कोई लड़ाई नहीं होगी सर. हमारी diplomats इतने अच्छे हैं कि युद्ध होने ही नहीं देंगे. Very good. Kudos to them. There are some people saying, oh, the two-front scenario is a wild scenario. Sir, we are supposed to plan on the worst-case scenario. But if that happens, then what will you do? Then what will you do? So you can't afford to downsize the army. And मैं आपको practical देखो, मैं आपको तजुर्बे से बोलूं, ठीक है? मैं आपको बताऊं बेटा कि जब मैं आर्मी में था, मैं कारगिल में सर्व करके आया, वहां पे मेरे अपनी पलटन में 6 killed, 21 wounded, 1 वीर चक्र पॉस्टमस, 4 सेना मेडल मुझे बीएसएम मिला, पलटन को चीफ साइटेशन मिली वगैरह वगैरह. But to every boy who died or was wounded, I needed to have 18 boys to get him down from 18,000 feet to 7,000 feet where the helipad was. You understand? Why 18 boys? 6 की कैरी होती है. स्ट्रेचर पे बांध के ले जाना पड़ता है. दिस इज द एंगल ऑफ डिसेंट. वो बंदा बेचारा जो 6 का है उसको रिलीफ चाहिए, तो वी यूज्ड टू सेंड 3 रिलीफ जो कि 18,000 फुट से लेके आएंगे. 12 14 14 18 घंटे की कैरी होती थी. अब जब लड़ाई चल रही है साहब, या तो मैं अपनी कैजुअलिटीज इवैक्यूएट करूंगा या मैं लड़ूंगा. एक प्लेटून में नॉर्मल छुट्टी उट्टी काट कूट के, कोर्स काट के 20-25 जवान होते हैं. साहब हम भुगते हुए हैं. उस वक्त भी ये जनरल मलिक थे और उस वक्त आपको याद है 1990 में हमारी इकोनॉमी कोलैप्स पे आ गई. तो उन्होंने बोला साहब हम आपका डिफेंस बजट नहीं बढ़ा सकते, जब हमारा जीडीपी बढ़ जाएगा हम आपको दे देंगे, तब तक के लिए आई एम सॉरी, मेक डू विद व्हाट यू. जनरल मलिक वाज वरीड. You know, he said, General Ved Malik, he said, let's cut manpower and let's ask the government for more capital budget. वही revenue budget, capital budget problem. ये पहली बार नहीं हुआ है. हमने कई बार होते देखा है बेटा, कई बार होते देखा है. उस वक्त मैं आ गया था एमओ डायरेक्टरेट में, and I was director MO5. Manpower was my job. जब मैंने देखा कि cut the army by 1 lakh. एक तो ये आर्मी कटर्स बहुत है हमारे देश में. They think manpower is a waste of resources. Sir, if you are watching the Ukraine-Russia war, रशिया की जीप बाहर आ गई है because manpower नहीं. With an army of 1.5 lakh, they have attacked Ukraine, which has 2.5 lakhs. Do you know that? And do you know the worst performing guys on the Russian side are the 3-4 साल वाले conscript. Worst, weakest link in their chain. सबसे ज्यादा मर रहे हैं. You know, so look around and see what's happening. Huh? You can't shut your eyes and say, ki, I don't care. The Ukraine-Russia war has no lessons for me. It has. All your equipment is Russian. There are tons and tons and tons of lessons from that war. And you want to say, you know, जब वहां पे ये finding है उस war की Russia-Ukraine, the 4-year short service, short-term inductee has not done well in actual combat, sustained combat. Because he's the weakest link in the chain. So now you want to make an army 50% short-term, 50% long-term. You see, youth is required. You also need experienced NCO. You also need experienced JCOs, experienced old soldier, one old soldier in a trench with a young recruit. You've done that. I have done that. Buddy pair किस लिए बना?
एक ओल्ड एक तजुर्बा भी तो कोई चीज है साहब, तजुर्बा भी चाहिए फौज में, बहुत बड़ी चीज उसकी है भी वो, वैल्यू बिल्कुल। है। जी। वो हमारी पलटन में बोलते थे, ओ पुराने, ओल्डी ओल्डस्टर, मजा हुआ खिलाड़ी। अब क्या करे भाई, उससे तो उसका ऑफिसर भी एडवाइस मांग लेता। ठीक है, सो यूथ इज गुड, वी नीड द यूथ, इट्स अ वेरी गुड आइडिया दैट we want to spread discipline to the whole country. What is the NCC for? Can you send it to the whole country? And 46,000 recruits, 30,000 out of them when they go out, वो क्या discipline बढ़ा देंगे? But at the same time, you have created a situation where that 4-year-old boy is not able to gel in his tenure. And when he learns his jobs, he is out. And the हाँ, army, in the 19 years of the service of the present Jawan, the army will have to train and induct 4 to 5 अग्निवीर। उस पीरियड में, अवधि में 4 से 5 तो आपके अग्निवीर हो जाएंगे सर। वो ट्रेन के ऊपर कॉस्ट नहीं होगा खर्चे पे। आर यू रिकवरिंग द कॉस्ट? इज द आर्मी रिकवरिंग द कॉस्ट? कि साहब हम भेजेंगे सीआरपीएफ का कल्याण हो जाएगा, बीएसएफ का कल्याण हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है साहब, मुझे बड़ी खुशी है, ये तो बहुत पहले होना चाहिए था। लेकिन वो सीआरपीएफ का जो है डायरेक्टर जनरल, वो साहब ने बोला है कि व्हाई शुड आई एक्सेप्ट रिजेक्ट्स ऑफ द आर्मी। दिस इज ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट बाय। So tomorrow, if these guys are not accepted, when will the Lawrence Bishnoi gang take them? Or will, हो ही नहीं सकता, वो disciplined है साहब। मैं आपको कह रहा हूँ कि जब मैं फौज में था, I was fighting in Punjab, we had to face this problem of the ex-servicemen disgruntled joining the terrorist ranks and fighting you in the Golden Temple, giving you a run for your money. You know the casualties we had in the Golden Temple? There's a prayer on your lips, we've gone in. हमारे लड़के, they knew how to, you know, do grazing fire, ऐसी साइटिंग करी थी वहां, हमारा बहुत नुकसान हुआ। तो ये कह देना कि साहब अरे एक बारी फौज का डिसिप्लिन छू दिया तो वो तो सुपरमैन बन जाएगा, कभी वो विचलित नहीं होगा, पूरे देश को वो सिखाएगा। वेरी गुड, नाइस इन थ्योरी, मेरे से पूछो, मैं लड़ चुका हूँ। और प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग जो ऐसी बातें कर रहे हैं, उन्होंने गोली की आवाज, दैट इज व्हाट वरीज मी। 2 साल की छुट्टी थी, 1 महीना, 2 महीने की छुट्टी थी, एक कट कट कट, ग्रेचुटी नहीं देंगे, लेट हिम नॉट अर्न हिज ग्रेचुटी, साला ग्रेचुटी मांगे। बात है ऐसा, वो आपके लिए लड़ने आया, आपको बचाने के लिए आया, आपका दुश्मन तो नहीं है, कुछ तो उसका भी सोचो। आप कल जवान हैं बेटा, आप आते हैं एज अ अग्निवीर, विल यू बी एबल टू मैरी? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है सर उसको पता ही नहीं 4 साल बाद आपका मेरा बड़ा अच्छा सवाल है। अब इस सवाल को मैं ऐसे बताता हूँ सर, जब मैं फौज में नहीं आया था, तो मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैं नौकरी कर रहा था सर। और जहां मेरी तनख्वाह फौज, जहां पे मैं फौज में कमाता उससे कई ज्यादा थी। लेकिन वो वहां से रिजाइन देके मैं खुली आंखों से आया कि फौज में केवल 5 साल करूंगा मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन, और 5 साल करने के बाद मैं बाहर आ जाऊंगा सिविल लाइफ में। भला ही मेरे को फौज पसंद आया कि नहीं है, हालांकि पसंद बहुत आई, अभी भी है। जैसे आपने बताया कि वंस अ फौजी ऑलवेज अ फौजी, तो वो खून तो वही है सर, वो रगों में, रगों रगों में है, वो रग रग में है वो। अब सर क्योंकि मैं मोटिवेटेड था और मैं आया था खुली आंखों से, और मैं तो 5 साल में सर मेरा पार्ट डी क्लियर था। मैं 3 साल की सर्विस में मेजर साहब बन गया था, एक्टिंग मेजर, फील्ड मेजर, क्योंकि मैं फील्ड एरिया में था सर। तो फ्रॉम जम्मू कश्मीर आई वेंट टू द नॉर्थ ईस्ट टू नागालैंड। तो एज अ 3 years सर्विस आई वाज द कंपनी कमांडर। तो मतलब जो मैंने फौज में देखा, और फौज ने मेरे को बहुत सिखाया सर। तो मेरा ऐसा मानना था, जैसे कि कुछ चंद एक देश ऐसे हैं सर, जैसे कि सिंगापुर, कोरिया, इजराइल, वहां पे तो आपको चंद एक साल फौज में कंपल्सरी देने ही देने हैं। आपको पसंद आया कि नहीं है, आपको तो फौज में आना ही आना है। अच्छा, फिर मैंने ऐसे एक और सोचा सर कि अगर आप लॉ करेंगे तो 5 साल लगेंगे लॉ करने में, इंजीनियरिंग करेंगे 4 साल, आप मेडिसिन करेंगे या बीडीएस करेंगे 4 साल, अपने आप को पढ़ाने में 4 या 5 साल तो कहीं नहीं गए सर। बड़े बड़े एक्टर भी हुए हैं जिन्होंने 5 साल लगाए हैं, इन्वेस्ट किए हैं एक्टिंग सीखने के लिए। 3 साल एनएसडी में, 2 साल एफटीआई में।
तो मुझे ऐसा लगा कि किसी भी फील्ड में जाओ तो ये एक तरीके से मेरी सीखलाई हो जाएगी, एक ग्राउंडिंग हो जाएगी, एक शेप मिल जाएगा मेरे को फौज में। तो मेरा ऐसा मानना था, अगर मेरे को इसका लाभ मिला है 5 साल का, और मैं फख्र से कहता हूँ कि भाई मैं एक फौजी हूँ, अभी भी मैं कहता हूँ फौजी हूँ, हम सब फौजी हैं सर जो फौज में आ चुके हैं, तो क्यों ना जवानों को, अग्निवीर को ये मौका मिले। तो ऐसा मेरा मानना था। मगर आपसे बात करके जिस तरीके से आप समझाते हैं सर ग्राउंड रियलिटीज, क्योंकि आप वाकिफ हैं ग्राउंड रियलिटी से, आपने जमीन पे वहां पे ऑन ग्राउंड काम किया हुआ है, तो मेरे को धीरे धीरे, आपको मैं ईमानदारी से बताऊं, अब तक मेरे को ज्यादातर वेटरन्स बहुत मिले सर। तो पिछले हफ्ते हम चीफ ने बुलाया था हमको, हम वहां पे गए, कई सारे वेटरन से हम चाय पे बात की, मगर मेरे को सच में ईमानदारी से समझ में नहीं आ रहा था सर क्यों लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से खुश नहीं है वेटरन्स। मगर आपसे जिस तरीके से आप समझा रहे हैं, मेरे को मेरे जहन में हल्का हल्का आ रहा है। जी सर, प्लीज सर। देखिए, मैं सिर्फ कहना ये चाहता था, हम खुश नहीं है ये नहीं, हमको चिंता है बेटा। अरे चिंता उन है सर, लड़कों की चिंता है। मेरी पलटन भी अभी लाइन ऑफ कंट्रोल पे है। उनके क्या हाल है, जब अगर 1.5 लाख की आपने कटौती फौज में कर दी, एक एक कंपनी घट हो गई है, ऑलमोस्ट अ कंपनी शॉर्ट एवरी बटालियन। मुझे सीओ के ऊपर दया आती है, जिसको अभी ये मैनेज करना है, जो सारे सीओ लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं, जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में है, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में है, लद्दाख में है, दीपा अरुणाचल वगैरह जैसी जगहों पे है। इट्स डिफिकल्ट जॉब। अब आप उसको कह रहे हो सीओ को कि पहले तुम सारे एनसीओ के लिखते थे एसीआर, जेसीओ एनसीओ ऑफिसर्स के, अब आप जवानों के एसीआर भी लिखो, अदरवाइज हाउ विल यू रिटेन। ये 25% रखूंगा, 75% किक आउट करूंगा। जिसको किक आउट करेगा वो अपने सांसद के पास जाके कहानियां कि साहब मेरे को बैटमैन करने के लिए बोला, मैंने मना कर दिया, तो देखो साहब मेरे खिलाफ एक्शन लिया। अब वो ये सब झंझट करता फिरेगा, यू कैन द मैनेजमेंट प्रॉब्लम। सो मेरा कंस्ट्रक्टिव सुझाव है, I see that you want to save costs, fine. I see that you want to keep a young profile, accepted. There is a way of still doing it with what you have done. You can tweak the system a bit, make it 7 years color service for the Jawan, 7 years service, so that he can have a viable military career. He can pay back to the organization for what the organization has invested in him, and not so much कि भाई बाकी देश का भला होगा, बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस का भला होगा, कोस्ट गार्ड का भला होगा। यस होगा, फाइन। तब किसी को फौज का भी भला करना है ना। The army has got a very serious job, very difficult job to perform. He must be able to perform optimally. So two concrete suggestions are: increase color service to 7 years. You will get tried and tested formula, which was there in the 71 war winning formula. Increase retention to 50% from 25%. So that the boy who has joined has got a fighting chance of becoming a permanent soldier, serving his full tenure, giving back to the organization what it invested in training in him. ये दो चीज आप कर लीजिए, you have a good scheme going. You have a good scheme going. I'm sure that's. I mean, I'm not being कि साहब वाह वाह नहीं करी, ताली नहीं बजाई, बड़ा गद्दार है। अरे साहब, for God sake, give us a break. हम आपको बता रहे हैं कि हमने साहब ये भुगता हुआ है। फौज को यंग करना ये पहली बार ये ख्याल नहीं आया। 71 के टाइम भी ये ख्याल था, उसके बाद भी ये ख्याल आया, फिर और प्रॉब्लम्स आई कि साहब ये जा रहा है, अब वो टेररिस्ट रिक्रूट कर रहे हैं, माओइस्ट खींच रहे हैं, तो जाने मत दो। यू नो दैट कलर सर्विस वाज इंक्रीज, की पेंशन देनी पड़ रही है। पहले हम उसको 75% और लास्ट पे ड्रॉन पेंशन दे रहे थे 71 वॉर में। जब हमने 71 वॉर जीत के दी सरकार को, तो सरकार ने पेंशन को काट के 50% कर दिया, और ब्यूरोक्रेट जिनको नहीं मिल रही थी उन्होंने भी अपनी कर दी। ये तो अच्छा मॉडल है। सो मैं ये कह रहा हूं कि साहब, वेलफेयर ऑफ द बॉयज दैट यू कमांड, आई वाज टॉट द IMA मोटो, द कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। इसलिए मैं अपना छोटा मुंह खोल रहा हूं, इसलिए मैं जो चिंता मेरे को है बाकी वेटरन्स को है, वो आपके साथ शेयर कर, ठीक है। और मैं सुझाव दे रहा हूँ कि दिस इज द वे, इफ यू एक्सेप्ट इट, कैन इजिली यू कैन अचीव बोथ योर ऑब्जेक्टिव एंड द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कॉस्ट कटिंग इज अ ग्रेट
but operational efficiency of the armed forces is equally important. Yes, you can turn around and tell me, Kisab, the three chiefs are onto it. They have signed onto it. I agree. मैंने जो लड़ाई मेरे को सरकार ने दी थी लड़ने के लिए, मैं तो जीत के आ चुका है. अब I can sit back and सीटी बजाओ कि ठीक है ये भुगते. You ask for this, now you fight with it. But that's not the way. सर And you मैं know the आपको chief was kind enough. एग्जांपल देता हूँ The सर. chief was kind enough to call the old veteran and sound him. That's what we are supposed to do. We are supposed to hold his hand. We are supposed to hold the hands of the service chiefs because they are carrying the can. I'm supposed to help him any which way that I can. Any which way. Whenever called, day or night. I mean, when I still, I think, carry a reserve liability. So it's my country. It's our, your and my army. Would you like it to be humiliated the next time around? What you and I feel diminished if, God forbid, something like that happens? Because, some chain is proving to be weak and the strength of a chain is the weakest. बाकी चेन बड़ी तगड़ी है, एक कड़ी कमजोर, वो टूट सकती है साहब लड़ाई. ये आपको और मेरे को सिखाया गया था. तो इसलिए we are seeing certain practical problems which we have seen repeatedly. The people now may be facing them from the first time. The people in the civilian side who are very well intentioned, they think that they have a terrific idea. I tell them कि ये तो साहब ट्राई हुआ पड़ा है ना साहब. जब हम फौज काट रहे थे कारगिल वॉर के पहले, कारगिल वॉर के बाद हमको 36 आरआर बटालियंस बढ़ानी पड़ी, 36. So I mean, go by experience यार. मगर सर जब आरआर बटालियन भी का जब इंडक्शन हो रहा था तब भी रेजिस्टेंस था. बहुत लोग इसके फिक्र में थे कि आरआर कॉन्सेप्ट ये काम करेगा कि नहीं करेगा. अब आप देखिए, आपने खुद रोमियो फोर्स आपने वहां पे कमांड करी है जम्मू कश्मीर में. मैंने साहब 9th सेक्टर दो टेन्योर्स आरआर में किए. 9th सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स किश्तवाड़, I commanded that sector. It did the best, by the way. जी सर. I got earned my Sena medal there, and my sector had the highest skill. Of course, people had reservation, but the army was receptive enough to accept, modify, and accept changes as things went by. पहला था आपकी खिचड़ी बना दो, फिर बोला साहब okay, specified regiment, so that we have only one regimental or 3 regimental centers to deal with for each battalion, for turnover, for this, for that, for manpower requirements. So we ironed out the difficulties. Now, would you want to face the difficulties and 4 years later start the process of ironing it out? What if China attacks in that time? Things are not too good on the border. So what we are trying to say is, what is anticipation? In my time in the army, there was a culture of candor. In the military operations directorate, when I joined as a major, I was a G2 there. I got promoted as G1 Ops, MO2. Then I got promoted as Director MO5 later. I came back for my second tenure in the MO Director. We had a culture of candor. Boy, say the truth. Put your hand on your heart and say what is best for my country and my army. And put it down on paper. It's not, my boss doesn't agree with me. It's not a criteria. You say what you have to say. And as a major, I could endorse an opinion which was contrary to my colonels. And we have had, that is what the Whitehall system of filing is. He says, I'm for, he says, no, I'm against. Next man says, I don't agree with these two. This is my view. And that whole considered staff analysis used to go to the chief. Pros and cons, he would see everything. That's my job as a staff officer. Do a staff analysis. I'm not here to clap. Wah, wah, maharaba. क्या शातिर दिमाग पाया है साहब. ये पाकिस्तान की फौज में होता है. हमारी फौज में बड़ा culture of candor. Let that continue. Yeah. It's not disloyalty if I disagree with you. नहीं सर. Is it disloyalty? बिल्कुल. आपने ये बात खूब कही. It is not disloyalty if I disagree with you. बिल्कुल सही कहा. सर एक बात बताइए. Do you think it is actually resistance to change
Because like for example, I'll tell you a small example. सर पिछले हफ्ते जब हम साउथ ब्लॉक में मिले तो मेरे बाजू में बैठे थे मेजर जनरल एसवीपी सिंह. वी आर फ्रॉम द सेम रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी एंड Right. वी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एक्चुअली. So in fact we came together from Gurgaon. He's a और very dear यहाँ पे friend, but he was on the general साहब sitting. Now General SVP Singh had come there earlier last, उससे पहले भी जब चीफ की कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पे तब वी बोथ वर देयर प्रेजेंट. सो ही न्यू कि हेडसेट लगाने हैं और ये लगाना है. मगर मेरे बाजू में जो लेफ्टिनेंट जनरल साहब बैठे हुए थे वो शायद पहली मर्तबा आफ्टर रिटायरमेंट उस हॉल में आए होंगे. तो उन्होंने बोला कि ये क्या है, हेडफोन माइक, ये अनकंफर्टेबल होगा, ये क्या चीज है, ये मैं नहीं लगा रहा. फिर उनने खुद देखा कि जब हॉल में एको हो रही है, हॉल में आवाज ही नहीं आ रही, तो उनको लगाना ही पड़े और कोई ऑप्शन था yes. भी नहीं. सो सिमिलरली So what is that? यू थिंक इट So इज no, जस्ट अ रेजिस्टेंस no, टू no, no. चेंज I'm सर? just interjecting here. What does that show? Experience counts. Please give value to what has already been done before. Most of the time, we come with मैं change कर दूंगा इस फौज को. अभी तक भत खा रहे थे. but you know, when you realize that lots of people have done it before, they have also come with very good intention, and he can always share with you, "Bhai, this is what we tried. Same thing as you are trying. This is what the result was. Consider it before you do it again." Change is good. Change is the law of life. And as Basil Little Heart, one of the greatest military historians, said, the only thing getting more difficult than getting a new idea into the military mind is taking an old idea out. Armed forces tend to be conservative and resist change. But there is a reason for it. Napoleon formed the आपने division. इतने अच्छी तरीके से समझाया कि आपका कंसर्न क्या है. आपने आप कई लोग जो वेटरन जो हैं वो खिलाफ नहीं है, उनको फिक्र है बस कि भाई क्या होने वाला है आगे. वो बात मेरे को समझ में आ गई. आप हमारे ही बच्चे हैं यार, हमारे ही ट्रेन किए हुए लड़के हैं. I have been an instructor in the Indian Military Academy. I have been an instructor in the Staff College. I have been an instructor in the National Defence College. मेरे हाथ के, just by the way, General Vipin Rawat, first Chief of Defence Staff of this country, was my gentleman cadet in the Indian Military Academy. Till the end of his days, he gave me a lot of respect. He used to call me, listen to an old man. I mean, I had nothing. He had nothing to gain from, I mean, otherwise to gain from me or this. And he could have easily ignored me. He had risen much higher than his instructor. But he was a gentleman to the tips of his toenails. Right? And वो खानदानी आदमी था. Every time I went to his office, he would stand up. He was the chief, man. And he was the chief of defense staff. He had no reason to stand up for a 2-star general. But he stood up कि मेरा पुराना उस्ताद है. He used to receive me at the door of his office, escort me back to the door of the office. Listen with great patience and respect. God bless him. Because I have very high regard. ये खानदानी बंदा दिखा. खानदानी. Not insecure, not this thing. मैं किसी से advice लूँगा तो लोग क्या बोलेंगे. He was open to ideas and advice on all sides. There is a very nice shloka in the Veda, you know, Rig Veda. Ano bhadraha. Let good thoughts come to us from all sides. To keep a mind open. You know, the mind is like a parachute. To function, it has to be open. With a closed mind, you will fall very badly and hurt yourself extremely bad. So you have to be a parachute. Keep your mind open. Keep receptive to new ideas. Yes, change is good, but change for the sake of change. Like I said, if it ain't broke, don't fix it. A number of the lessons of World War II, are you aware, have been relearned in Ukraine. Medium artillery is a war-winning factor. 45% of tank kills have come from medium artillery. 65% of artillery counter-battery neutralization is by medium artillery. And about 55% vehicles were being destroyed medium artillery. 2/3 of the casualties inflicted artillery. No wonder the Russians call it the god of war. They're using it very well. A lot of lessons of World War II have been revalidated. So to say that my previous guys who fought for 5 years
had no clue of combat. मेरे को पता है. I have stayed, I have had 4 tenures in Delhi and 5 in Mumbai. सर मगर ये बताइए सर, आप चॉकलेट आपके अंदर इस उम्र में भी इतना ज्यादा, आप जो कहते हैं कि बाल धूप में सफेद नहीं हुए, तजुर्बे से हुए हैं सर, आप में इस उम्र में भी इतना ज्यादा जोश है कि आप किसी भी यंगस्टर को यू कैन गिव हिम अ रन. अब मैं ये कह रहा हूँ सर, जब आप सर जब आप 19, 20, 21 साल के थे, जब आप फौज में आए थे, तो कितना जोश होगा आप में, मैं वो एक तो वो दिख रहा हूँ. दूसरी बात सर, आपके खुद के कोर्समेट सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, परमवीर चक्र, तो सर जब it is again people who are young, they will guard the border, right? Like when you're talking about things are not good at the Indo-China border, तो जो यंगस्टर होगा सर, वही तो गार्ड करेगा ना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, या जैसे कोई लाइन तो खैर वहां पे है ही नहीं बखैर. अब जनरल साहब थोड़ा ना वहां पे आएंगे गन लेके और डिफेंड करेंगे. ही विल एग्जीक्यूट हिज ऑर्डर्स, ही विल डू द प्लानिंग. सो उस तरीके से क्या आप इत्तेफाक नहीं रखते इस बात से कि यंगस्टर जब आएंगे तो शायद और सीमाएं मजबूत होंगी, हमारे देश की सीमा, बॉर्डर्स और सुरक्षित रहेंगे? Look, I said, who's against youngsters coming to the army? I'm saying keep them for a time so that वो youngster जो जब कुछ सीखता है, is able to contribute, is able to gel with the tank crew, is able to gel with the gun crew, is able to become a perfect infantry soldier who goes beyond being able to pass the BPT, put a standard shot, and can do drill. He has to learn a lot of tactical things. The whole of the Sri Lanka campaign, except the special forces, the 9 para commando and the other para commandos, none of our units were able to ambush the LTT. The LTT ambushed us hundreds of times. Somebody has to teach you where is, if you read the recruit syllabus. By the way, I have been at my regimental center as a G1 trainee. The recruit syllabus includes ambush, patrolling, section leading, platoon leading, section advance, platoon leading tactic, counter sniper drill वगैरह, ये सब उसमें है. अब टाइम होगा ये सब ट्रेन करने के लिए. When the guy comes from this regimental center to the unit, the CO says, भाई ये सब तो तूने वहां सीख के आया, मेरे पास टाइम नहीं तेरे को दोबारा सिखाने का. Just go and put an ambush. And that's where you lose some boys. So that's what I'm saying. You have to train that boy properly, and you utilize him properly. The optimal time, based upon combat experience, not experience in the air-conditioned office in Delhi. Combat experience is that it takes 7 years to give you an optimal soldier. So you want to get it down, get it to 6, get it to 5. But 4, I'm sorry, you are neither here nor there. You are neither fish nor fowl. And this could. Number 2, the shortage of manpower. For God's sake, make it up optimally. Russia is short of manpower. It is showing the strain. You are blessed with manpower. 1.4 billion Indians, average age 26 to 27, and you want to cut jobs? You must be crazy, man. You want to cut jobs? Every job that you create, you are helping a family. In 2 years, we stopped recruitment. I mean, is it the most peaceful environment that India has ever got? I mean, I leave that to your better judgment and the judgment of my colleagues who are now all over. May God bless them. May God give them the wisdom, the fortitude, the courage. I'm sure they'll do very well. Every generation thinks, hum to bahut tough the. But the fact is, my generation was blooded in the 71 war. Many of my coursemates died on the first night of service because we were taken straight out of the academy and into the battlefield of Bangladesh. Like you're saying, my coursemate got a Paramveer Chakra at 21. So there are so many like that examples like that. हम भुगते हुए हैं ना साहब, हमको बहुत. It's my job to pass the torch. You're prepared to say कि इसने ताली नहीं बजाई, वाह वाह मेहरबा नहीं कहा, मुकर्रर मुकर्रर. अब कोई शायरी थोड़ी ना हो. सर आपने बखूबी समझाया कि वेटरन्स के दिल में चिंता क्या है. सर आते हैं यंगस्टर्स के ऊपर. सर जो जवान लड़के हैं, जो मोटिवेटेड हैं, जिनको फौज में आना है, जोश है, जज्बा है, जुनून है,
और कोई नौकरी नहीं है. Like as we know, फौज is not a way, it's not a job. It can be a good career, it can be a good quality of life, it can be a very good way of life. It can be जिसके It is a way adventure of life. Why are you spoiling it? जी सर, नहीं बात For सही है God's sake, सर. it is a damn good way of life. It is one of the most honorable careers in India. It is. The armed forces are the most respected institution in the country. See any poll survey. So, if it ain't broke, don't fix it. Don't do surgery. And if you do surgery, please ask some of the old timers, has this surgery been done before? What was the result? It will help you. Then thereafter, suno sabki, karo man ki. Please. I would also do the same if I was there, because I have to carry the can. I have to win. I have won all the wars that my country gave me to fight, all the battles, not wars, but battles that my country gave me to fight. You still have to win yours. You are carrying the can. You are carrying the can. And wah, wah, maharaba, and I'm sorry, this very, very, I'm sorry, in my time, licking was considered very low down. You were taught that in the academy. And if you try it, you would get ticked off so badly. Don't lick, mister. Talk straight like a soldier. Yeah. I'm supposed to tell you straight. There has to be a culture of candor which was there in the armed forces. It can't be litmus test of loyalty. कि जो मैंने कहा इसने ताली नहीं बजी. That's not a litmus. My loyalty is to this country and to the army that I serve, to the regiment that I serve, to the unit that I serve. जहाँ मैं जाता हूँ लड़के अभी भी पहुँच चुके हैं because I led them through combat. I led them through combat. I got most of them back alive. And I'm extremely sorry for the ones that I could not see. So we are trying to see that, the country doesn't falter anywhere. The army doesn't falter in the next battle. It's my job to give that piece of advice. Advice is for free. Advice is for free. One second. Jesus. Hello? Sir? Hello? हाँ बोलो. हाँ. अभी ओके, थैंक यू. एडी, वो मिलन आपको कॉल कर रहा है. ही वांट्स टू टॉक समथिंग विद यू. सॉरी सर, माफ कीजिएगा सर, मैं आपसे इतना एंगेज हो गया आपके साथ गुफ्तगू में, और आई वाज लाइक लिटरली लर्निंग सो मच एंड लिसनिंग टू यू कि 1 घंटा कहाँ चला गया. और मैं जानता हूँ, आई रिकॉल द फैक्ट कि आप बहुत मसरूफ हैं, फिर भी आपने मेरे लिए वक्त निकाला सर. शुक्रिया बहुत बहुत आपके वक्त के लिए. और मेरे को इसमें बहुत सारी चीजें परसेप्शन में आ गई, बहुत सारी चीजें समझ में आई, और उम्मीद है कि हमारे सारे दर्शकों को भी ये बात समझ में आएगी. मगर जा जाते एक अहम सवाल है सर. आपने वेटरन्स की चिंता तो समझा दी सर. अब सर यंगस्टर्स जो कि अग्निवीर बनना चाहते हैं, उनके माइंड में फिक्र है कि ये हमारे लिए करियर नहीं होगा, हम इसके बाद क्या करेंगे, 4 साल के बाद हमें क्या होएगा, ये होएगा वो होएगा. मेरा ऐसा मानना है, अगर सर मैं खुद अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं बोलूंगा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक सीखला है, ये क्वालिफिकेशन होगी कि आप 21 साल में तो एक ग्रेजुएट निकल के आता है. 21 साल में तो वो लड़का जब 21 साल में बाहर निकल के आएगा तो अरे ये क्यों रिटायर हो 21 साल में, ऐसे लोग कह रहे हैं ना, रिटायर कौन हो रहा है, जिंदगी शुरू उसकी होगी. इट्स लाइक एन एडेड एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन. लाइक फॉर एग्जांपल सर, आपने नेशनल सिक्योरिटी की बात करी, बिल्कुल इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं, कोई दो राय है ही नहीं जो आपने बात रखी है. अब आते हैं सर एक और अलग एस्पेक्ट पे, लाइक फॉर एग्जांपल लाइफ स्किल्स. सर बहुत लोग ऐसे होते हैं, एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि अगर कहीं पे आग लग जाए, भगवान ना करे खुदा ना खासा, तो उनको मालूम नहीं होगा रिएक्ट क्या करना है, पानी डालना है, इलेक्ट्रिक फायर पे क्या करना है, उनको मालूम नहीं होगा सर. सर अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो सीपीआर का तरीका नहीं मालूम, कोई अगर डूब रहा हो और किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो क्या करना है. अगर गाड़ी चला रहे हैं आम जिंदगी में, पंचर हो जाए, गाड़ी चलानी तो आती है, पंचर कर स्टेपनी बदलना नहीं आता सर बहुत सारी लेडीज को. आई मीन नॉट ओनली लेडीज, आई डोंट मीन टू बी सेक्सिस्ट ओवर देयर, बट अ लॉट ऑफ पीपल in real life I'm talking about. सर फौज वो लाइफ स्किल सिखा देती है कि जिंदगी जीने का तरीका आ जाता है. तो वो ट्रेनिंग, वो मतलब फौज ने एक बार छू लिया किसी को, ये बात सर मतलब दैट पर्सन बिकम्स गोल्ड एक्चुअली, लिटरली. सो
मेरा एक और वो है कि सर इट विल बी गुड फॉर द नेशन, इट विल बी गुड फॉर नेशन बिल्डिंग ओवरऑल, दैट इज माय थिंकिंग. नहीं बेटा देखो, there are a lot of thought has gone into this scheme. They are working a lot on seeing that absorption takes place, and you know, militarily skilled people go. But I am again talking from experience. I checked out figures with the Directorate General of Resettlement. You know how many of our retiring soldiers so far have been absorbed in Class C and Class D posts in the paramilitary forces? Class C 0.48%, Class D 0.9%. So now we are being assured that 10% will be absorbed. Okay, somebody who is very legal minded will tell you, is that a commitment which is frozen in stone? Tomorrow, day after, day after, God forbid, I mean, anything can happen. This is a democratic country. If there is a change, will the next government agree to this? Now we were hearing a discussion of the major industrialists, right? And one of them was saying, you know, yes, I will give them a job, but with these kind of skills, I will pay 15,000. आपने उसको 30,000 देके 40,000 देके उसके मुंह में खून लगा दी, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा 15,000. ठीक है? This is what the industrialist was saying in one of the panel discussions that I heard on AGNIPATH. But my problem is not at all with that. I am not so much worried about his second career. मेरी पहली worry है his main career. How much will he be able to contribute in 4 years of total tenure? How much will he learn? And when he learns, will he be able to give payback to the main mother service? Yes, वो देश का कल्याण करेगा, वो पैरामिलिट्री का कल्याण करेगा, कोस्ट गार्ड का कल्याण करेगा, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का कल्याण करेगा, वगैरह वगैरह वगैरह. What about the army? भाई, you and I, our primary concern is the army. Not got a easy job. कि पार्ट टाइम है साहब, पार्ट टाइम सोल्जरिंग कर लो, मेन जॉब है नेशन बिल्डिंग. नेशन बिल्डिंग तो हम ऑटोमेटिकली कर ही रहे हैं यार. एवरी टाइम कोई नेशनल डिजास्टर होता है, पहला रिस्पॉन्डर कौन है? डिस्पाइट दी एनडीआरएफ इज द आर्म्ड फोर्सेस दैट गोइंग. हम तो सब कर रहे हैं, नेशन बिल्डिंग तो हम कर रहे हैं. हमारे जो रिटायर्ड लड़के बाहर जा रहे हैं वो भी तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. लुक एट द सी चेंज इन द कॉन्शियसनेस last 8, 9, 10 years. किसने किया है? Largely your armed forces veterans who are speaking like you, who are speaking on television, who are going on debates, etc., etc. You cause that change in the consciousness. That's good. But that is my post-retirement role. That is my secondary task. My main task is to fight and defend this country. I'm saying in that, what is the operational effectiveness of the Agniveer at 4 years and 25% retention? अगर वो लड़ाई हो जाती है उसके तीसरे साल में, how willing will he be to go and get shot? How willing will he be to go and get killed? कि साहब मैंने तो जाना है, मेरे को पता नहीं, अगर लंगड़ा लूला हो गया तो फिर तो माशाअल्लाह. How will he be risk averse? That is the worry. People were risk averse in Vietnam. Do you know that? The people who were on NAM tour of duty, go back and read the history books there. That is where the American army changed from conscript army to all volunteer. They said, we don't want conscript. We want volunteer. Now people are quoting to us Israel. Israel की population कितनी है? 6 million की वो population, वो देश है. ये 140 million का देश, billion का देश है साहब. How can you, what suits Israel suits you? What suits America suits us? Nonsense. Americans have to learn from this army. In the Kargil war, the Americans said, the Indian army is an army that truly fights. आप कह रहे हो साहब इस फौज की तो काया पलट करने की जरूरत है, भत खा रहे हैं, फालतू पेंशन ले रहे हैं. क्या मतलब? You know, औरों ने हमसे सीखना है साहब. हमने जाके औरों से नहीं सीखना अब सब जगह से. We always keep our eyes and ears open. There's something good, we will absorb it. But our conditions may not be, the Israeli model may not suit the Indian model at all. Right. At all. So have the dum now, yaar. We are an old civilization, ancient. 75 साल हो गए आजादी के. We don't have to go around borrowing from other armies. उसने किया हम भी करें.
अरे चीन की फौज ने 4 साल की सर्विस रखी, ठीक है, और जब वो लद्दाख में लड़ने आए, हाथापाई हुई, ऐसी मार खाई। डिड यू सी दैट वीडियो? वो कुछ रो रहे थे, वो रो चाइनीज रहे थे। जो सोल्जर थे, उनको बोला, वो उनको पास आउट किया अपनी रिक्रूटमेंट सेंटर से और बोला कि साहब तुमको जाना है लद्दाख। धारे मार के बच्चों जैसे रो रहे थे कि वहां वन चाइल्ड सिंड्रोम, वन चाइल्ड फैमिली, और वो एक बच्चा 4 साल के लिए बोला टाइम पास करके निकल जाऊं। उसको बोला कि हमारे जाट, हमारे खालसा से पाला पड़ेगा, उन्हें लगाई मार, तो वो तो रो रहे। आप कह रहे हो साहब चाइना ऐसा करता है, हम भी ऐसा करें। ये चाइना करे जैसा हम कर रहे हैं यार। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हुए हैं, बड़ी तगड़ी फौज है, कारगिल में फिर पीटा है, जरूरत सही पड़ेगी बात, इंशाअल्लाह फिर मारेंगे। सही बात है सर, सही लेकिन बात है। यू नो माय वरी इज द आर्मी। बाकी सब बहुत बड़े, मेरे से बड़े दिग्गज लोग हैं सोचने के लिए देश की, ठीक है, और कि पॉपुलेशन में क्या होगा, उसकी ट्रेनिंग कैसे करेंगे, पेट्रियोटिज्म ट्रेनिंग वगैरह, फाइन, वील डू दैट as part of my after retirement plan. I'm doing just that without anybody asking me to do. जी सर, सर So what आपका I'm लगता saying है। is कि जी, there is the career per se, the military career, उसकी attractiveness को आप क्या कर रहे राइट। हैं? अगर एक अग्निवीर को खटका पड़ जाता है, साहब मैं शादी करूं ना करूं, हम्म। मेरी स्टैंडिंग क्या है मेरे गांव में? अभी फौजी की स्टैंडिंग देखिए, जवान आता है फौजी साहब आ गया, जवान आता है गांव में फौजी साहब आ गया, आ गया। बहुत स्टैंडिंग है यार। I mean, change is good. It's excellent. Things must change. Not change for the sake of change. Change for the sake of उसने किया, इसने किया, keeping up with the Joneses. They are doing a pretty good job, I thought. राइट सर, Yes, there is राइट। no end to improvement. But then you are saying you're not talking of improvement. You're talking of across the board change in recruitment philosophy, training philosophy, retention philosophy. Number of you are reducing the strength of the army. 1.5-2 लाख से आपने कम कर दी। Threat assessment क्या है? On what threat assessment has that economist cut this army? You tell me. He saved money. He can get Padma Bhushan and Padma Vibhushan. But is he qualified to do a threat assessment with China and Pakistan combined, with Afghanistan also a potential problem area, with Turkey trying to finger you through Pakistan? I mean, who's done that threat assessment to say, oh, we are in a very peaceful stage, we can go back to the charka? हम as it is अहिंसावादी हैं, 3 पानीपत की लड़ाई हारे हुए हैं, क्या फर्क पड़ता है चौथी? फर्क पड़ता है हमारी इज्जत को बिल्कुल पीछे ऊपर रख सब। साहब। वी कांट अफोर्ड सच अ सिचुएशन अगेन। हमारे पुराने राजे महाराजाओं को भी बड़ा अखरता था फौज पे स्पेंड करना। They were prepared to spend more on Kathak than on the military. तो फिर भुगता ना आपने। 850 साल आप रहे हैं, मार खाते रहे। तो पिछले 150 साल में we have shown a comeback, great comeback. Why are you again trying to weaken it? That's what I said. If a thing ain't broke, don't fix it. And now that it has been done, a lot of thought must have been given. It has been given, and I value those people. All that I would tell them is take help or make use of the experience of your old veterans. It won't harm you, do you any. Will always benefit. The army chief has been kind enough to do that. I'll be meeting him separately also to try and put across certain things what we have learned from the Russia-Ukraine war, what we have learned in my career, and how we can. All that I'm saying is, okay, you've had a scheme. It has been approved at the highest level. I mean, I am nobody to dream of getting it changed, but I can offer suggestions. My concrete suggestions to sum up: extend color service 7 years, increase retention from 25% to 50%. You got a damn good scheme. You got a अच्छा, damn good scheme. आपको लगता नहीं कि अगर जो 25% रिटेंशन है, कई लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, क्या आप लगता नहीं कि ओनली द क्रीम, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट वुड बी रिटेन देयर आफ्टर? मतलब यू हैव टू बी एक्सेप्ट ट्रूली एक्सेप्शनल
द कंपटीशन लेवल, हेल्दी कंपटीशन बढ़ेगा और आप परफॉर्मेंस करने की भावना बढ़ेगी। तो अगर कम रिटेंशन रहेगा तो आपको लगता नहीं कि 25% से हम अगर 50% करते हैं, वो भी आपका भी पॉइंट है, मैं मानता हूँ ये बात, मगर क्या आपको लगता नहीं कि अगर कम रिटेंशन रहा तो यू विल स्ट्राइव टू डू बेटर, यू वांट टू टेक बी रिटेन्ड, and you would be, army would be retaining only the cream. As a result, the army also would be enriched in a way, sir. Look, at what stage does a competition become from healthy to unhealthy? I want that boy to jail. You have put him in a cutthroat competition ki 25% rakhenge, 2/3 of you will be kicked out. What kind of a competition do you visualize? Tell me. You are the commanding officer. What kind of a this thing that you see? If you make it 50%, it makes it a viable career. I'm saying जब वो लड़का जवान career की choice कर रहा है, give him, offer him a viable military career. That viable thing will come if he says, yeah, मेरे को 50% chance है retention. Just by the way, what was the retention percentage in the short service? सर हमारे कोर्स में 70% हमारे कोर्समेट्स ने खुद ही वॉलंटियर किया कि भाई उनको पसंद आई, ऐसा नहीं पसंद नहीं आई, वो आई थे केवल 5 साल करने के लिए मुझ जैसे। तो हम 5 साल करके 70% ऑफ अस आर टुडे एक्स सर्विसमैन, वी वेंट आउट। सो लोग जब पूछते हैं अरे यू लेफ्ट द आर्मी, ऐसे नो, आई कंप्लीटेड माय शॉर्ट सर्विस कमीशन, जो बात हुई थी, जो व्हाट आई साइंड अप फॉर। You see, short service was 5 years, then it was increased that you could opt for another 5 years and make it 10 years. Why was that? कि थोड़ा viable contribution ये लड़के ने सीख लिया. He may be better than some permanent commissioned officer. He can let him contribute and let the best of them get permanently selected and absorbed. Right? What I'm saying is कि when you want people to gel in a very short time, if you're in a combat environment, wo the external pressures make you gel, force you to gel very quickly because your life is at stake, right? But that kind of a feeling, we do not leave our dead and wounded behind. Will it come in a boy who is done 3 years and he says, "Ab jana hai, I have to look for another job." फिर लड़की कोई देगा नहीं देगा, मेरे को वो भी देखना है, ऊपर से मैं टांग उड़वा के आ गया तो मेरा क्या होगा? So there are doubts about his risk averse तो नहीं हो जाएगा, risk averse तो नहीं, like the Chinese फौज की बात कर रहे हैं, उसमें 4 साल की सर्विस है, ये कोई फौज है? रोबोटिक आर्मी देते वो जड़ों में रोबोटिक आर्मी 62 में, that you know what is the strength of the Chinese army? 3.5 million. Now we are saying, look, the Chinese have cut their army. Arey, they had an army of 3.5 million here. You have an army of 1.2 million. You have to face China and Pakistan. And you cut the army to say that we will get weapons. What extra weapons have you got so far? Thank God, काफी फर्क पड़ा है from the UPA era. But still you are nowhere near. The Air Force requires 45 squadrons. You are down to 30. Then you cut the army. So, you know, for God's sake, there are many manpower haters in this army. I'm not one of them. I think motivated manpower is the greatest asset that we have. A man is over the machine. Are the Russians short of machines? Are the Russians short of tanks and guns? What are they short of? Trained, motivated military manpower. You have that. You would have cut it. I get your point. It is not the machine, it's the man behind the machine, and we've proved it. The man Sir, on 20th February 2019, in 4 years, captain that you're time, not getting the kind of men who won the 71 war. Period. That time, Wing Commander Abhinandan, with a MiG-21 Bison aircraft, he gave a chase to an F-16 and he shot it down. And brought one down. I buy your point there, sir. It's the man behind the machine. And sir, ये बात आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से, बहुत ही clearly, बारीकी से आपने समझाई, that you only fix something which is broken. You don't fix something which is already fixed. So ये बात is बहुत समझ में आई. Is functioning in delivering. Are you dissatisfied with the performance of this army so far? Are you dissatisfied with our performance in 71 war? Not at all. 13 days we broke Pakistan. 2.
हमने 93,000 गलवान में ही prisoners धूल of war. चका दी चाइनीज को. Kargil, we threw every bloody Paki out. So what is wrong with this army? You please tell me. What is wrong with the armed force? Nothing. That you need The across best the board army in the service. world. And then you, anyway, I don't want to say further, but I think you have a scheme. A lot of people have put a lot of thought. I respect that diligence that they have done. All that my constructive suggestion is to conclude 7 years, 50% retention. You have an excellent scheme. The same scheme will work wonders. But 4 So years is this not is, viable. 50, दोस्तों सुना आपने, 25% retention creates its own level of management problems and tension. दोस्तों सुना आपने, ये So I एक think ऐसे we will जाबाज on this फौजी, happy note. एक ऐसे इलस्ट्रियस जनरल बता रहे हैं अपने तजुर्बे से, इनका मानना है. तो बिल्कुल इसमें आप गंभीर तरीके से आप देखिए, सोचिए, बिकॉज जनरल जीडी बख्शी इज अ वेरी बिग इन्फ्लुएंसर. वो जब बोलते हैं लोग उनकी बात सुनते हैं, उनकी बात को बहुत ही सीरियसली लिया जाता है. तो आप इसमें विचार करिए और अपना मन बनाइए. डोंट लेट एनीवन भड़काओ यू, इन्फ्लुएंस यू और टेल यू कि अरे ऐसे करो वैसे करो, ऐसे मत करो. आप अपना सोचिए, अपना दिमाग लगाइए. सर रियली आपके साथ गुफ्तगू करके मैं आई कैन गो ऑन टॉकिंग टू यू फॉर आवर्स. योर एनर्जी इज अनमैच्ड सर, अनमैच्ड लिटरली. मतलब Thank आई you. On that happy note, we'll call it a day. Jai so yes Bharat, sir, Jai Hind. I was feeling guilty of taking your time, but sir, really, sir, thank you very much. I truly appreciate the fact that you took out your time and effort and you given your energy, and you have, for the betterment of the youth of a country, for them to use their top story on their own and then form an opinion and do what they feel is right. Sir, thank you really very much, sir. Truly honored, sir. Truly honored to be speaking to you, sir. Jai Hind, sir. God bless. Jai Hind.